गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बेस एडिटिंग थेरेपी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 9 मंथ ओल्ड बॉय वो फर्स्ट नॉन ह्यूमन बना है जिसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया है कस्टम बेस एडिटिंग थेरेपी का यूज़ करते हुए। तो जो ये बॉय है ये CPS1 डेफिशिएंसी से जो है वो पीड़ित था। एक जो कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें टॉक्सिक अमोनिया आपके ब्लड में बिल्डअप होने लगता है। तो CPS1 में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजन नहीं हो पाता है बॉडी में, उसकी वजह से हाइपर अमोनिया की कंडीशन हो जाती है जो कि फेटल भी हो सकती है। तो क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर बेसिकली एक इम्यून सिस्टम है जो कि माइक्रोब्स में पाया जाता है जैसे कि बैक्टीरिया में, और फिर वो इन्वेडिंग वायरसेस को उससे फाइट करते हैं। जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरियल सेल को, क्रिस्पर क्या करता है कि एक मेमोरी एस्टैब्लिश कर देता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, पीस ऑफ वायरस का जीनोम जो है वो निकाल लेता है और उसको इंसर्ट कर देता है DNA में अपने खुद के जीनोम के। तो क्रिस्पर क्या करता है, फिर एक न्यू गाइड RNA प्रोड्यूस करता है जो कि एक एंजाइम होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन उसको गाइड करता है जिसको हम CAS9 कहते हैं कि आप मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करो और उसको एलिमिनेट कर दो उस वायरस को। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बिल्ड किया गया था 2012 में, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री भी जो है वो इनको फाउंडर्स को मिला था। तो अब होता क्या है, कैसे क्रिस्पर CS9 जीन एडिटिंग काम करती है। सबसे पहला टास्क तो होता है जीन एडिटिंग टूल का कि आइडेंटिफाई करो अब नॉर्मल DNA सीक्वेंस को। और एक बार अब आपने लोकेट कर लिया तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिर RNA जो है उसको जो है गाइड RNA जो होता है, जो कि जिससे आपने सही करना है उस फॉल्ट को, उसको अटैच कर देते हैं CS9 एंजाइम के साथ। ये गाइड RNA फिर जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है बैड DNA सीक्वेंस को, और फिर CS9 एंजाइम जो है वो कट करता है उस DNA को स्पेसिफाइड लोकेशन से, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो रीग्रोथ को रोकने के लिए साइंटिस्ट एक और चीज़ करते हैं कि वो सप्लाई कर देते हैं करेक्ट DNA सीक्वेंस को उस कटिंग के प्रोसेस के बाद, ताकि वो अपने आप को ब्रोकन स्ट्रैंड ऑफ DNA के साथ अटैच कर ले और फिर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन ना हो या रीग्रोथ ना हो प्रॉब्लम की। तो बेस एडिटिंग और क्रिस्पर CS9 टेक्निक्स दोनों बहुत सिग्निफिकेंटली डिफर करती हैं। क्रिस्पर टेक्निक में जो है बेस एडिटिंग टेक्निक में जो है वो कोई डबल स्ट्रैंड ब्रेक नहीं होता, और टारगेटेड सिंगल बेस कन्वर्जन्स हो जाती हैं इसमें। साइंटिस्ट जो है वो मिस पेयरिंग ऑफ बेसिस को भी जो है वो फिक्स कर देते हैं। बेस एडिटिंग सिस्टम जो है वो एक पेंसिल और इरेजर की तरह काम करती है, जबकि जो क्रिस्पर टेक्निक है वो सीजर और ग्लू की तरह काम करती है। और बेस एडिटिंग में कोई फॉरेन DNA इंसर्शन भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। ट्रीटमेंट बहुत पर्सनलाइज होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक ट्रीटमेंट बनाया और वो सब पेशेंट्स को दोगे। ये एक इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए होता है, इंडिविजुअलाइज होता है पूरा ट्रीटमेंट। और इसका जो अप्रूवल मैकेनिज्म भी है जैसे कंट्रीज़ लाइक इंडिया में, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रेडिट सपोर्ट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने रिकमेंड किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ डेडिकेटेड फाइनेंसिंग स्कीम, जिससे कि अलाउ किया जाए मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो लोन्स ले सकें कंसेशनल रेट्स पर। तो मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो क्रूशल हैं, लेकिन इनको ओवरलुक किया जाता है सेगमेंट को इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक में। परसिस्टेंट चैलेंजेस फेस करते हैं ये एक्सेस करने में अफोर्डेबल क्रेडिट। और इन रिस्पॉन्स नीति आयोग जो है उन्होंने रिलीज़ किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिकमेंड की है जिसमें पॉलिसी इंटरवेंशंस। इंडिया का MSME सेक्टर जो है, जिसमें MSME आता है, उसमें 29% जो है वो कंट्री का वो GDP में कंट्रीब्यूशन देते हैं और 60% ऑफ वर्कफोर्स इसी में ही एम्प्लॉयड है। माइक्रो एंटरप्राइजेज 97% है, स्मॉल एंटरप्राइजेज 2.7% है, और जो मीडियम एंटरप्राइज है वो सिर्फ 0.3% है। लेकिन 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है MSME का वो यही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसीलिए कहा नीति आयोग ने कि लगभग $10 बिलियन का क्रेडिट गैप है इस सेक्टर में। तो इनको बहुत ही कम प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स भी मिलते हैं। 18 जो MSME गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें से सिर्फ 8 ही जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस को कैटर करती हैं। तो इसलिए नीति आयोग ने कहा है कि सेक्टर वाइज फाइनेंसिंग स्कीम लाई जाए एंटरप्राइज टर्नओवर के बेस पर, जिसमें लोन्स को कैप किया जाए 25 करोड़ पर, और मैक्सिमम 5 करोड़ पर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पर जो है वो लोन मिले। स्कीम जो है वो मैनेज की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा। एक क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी देने को कहा गया है जिसमें 5 करोड़ की लिमिट के साथ। और रिपोर्ट एडवोकेट कर रही है कि रिटेल बैंक्स को आप इसमें इन्वॉल्व करो ताकि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ना हो। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अलावा मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो लो अडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, इनएडिक्वेट R&D सपोर्ट, लैक ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्चुअल एंटरप्राइज नीड्स के बीच में जो मिसमैच है ये सब फेस कर रही है प्रॉब्लम। इससे इनकी स्केलेबिलिटी भी जो है वो रुकती है और इनोवेशन पोटेंशियल भी रुक जाता है। तो नीति आयोग ने कहा है एक उद्यम प्लेटफॉर्म जैसा एक डेडिकेटेड सब पोर्टल बनाओ जिसमें कि मीडियम एंटरप्राइजेस स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है उनको स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जो है वो इंटीग्रेट की जाए। तो एक हम चाहते हैं कि इन मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको इंक्लूसिव कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्ट चाइना सी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना का लियानिंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईस्ट चाइना सी में एंटर कर गया है जापान के सेंकाकू आइलैंड में पहली बार और कंडक्ट कर रहा है एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स क्लोज टू जापानीज टेरिटरी। तो ईस्ट चाइना सी क्या है? आम है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की सेमी क्लोज सी है, बॉर्डर्ड बाय येलो सी, साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान के ryukyu और कुशु आइलैंड्स, चाइनीज़ मेनलैंड। ये कनेक्ट करता है जापान सी को सुशिमा स्ट्रेट के साथ, साउथ चाइना सी को ताइवान स्ट्रेट के साथ। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी दोनों मिलकर चाइना सी बनाते हैं। कंट्रीज़ जो यहाँ पर बॉर्डर करती हैं वो हैं साउथ कोरिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान और चाइना। तो येलो रिवर, यांगसे रिवर यहाँ पर जो है ड्रेन होती हैं। वेदर यहाँ पर मानसून विंड्स द्वारा डोमिनेटेड रहता है। लगभग 35% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम जो है वो इसी रूट से ही ईस्ट चाइना सी के थ्रू ही ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS ब्रह्मपुत्रा। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्रा जिसको एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था डॉकयार्ड एक्सीडेंट में लास्ट ईयर, वो दोबारा से सी वर्दिनेस गेन करने वाली है बाय द एंड ऑफ 2025 और फुली कॉम्बैट रेडी हो जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर मिड। तो INS ब्रह्मपुत्रा क्या है? फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट ब्रह्मपुत्रा क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जिसको GRSE ने बनाया है कोलकाता बेस्ड, और इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में अप्रैल 14, 2000 में। और कई तरह के रोल्स ये ले लेती है जैसे कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग, काउंटर टेररिज्म और एंटी पायरेसी मिशंस, और ये ऑपरेट करती है सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर्स को भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 38th मीटिंग ऑफ सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल हुई है जिसमें रिकमेंड किया गया है कि 36% इंक्रीज़ कर दिया जाए स्टाइपेंड नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन एस्टैब्लिशमेंट्स को जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स करवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ये का इनिशिएटिव है स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए और अप्रेंटिसेस को एनरोल करवाने के लिए, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, तो ताकि हम एक ट्रेंड वर्कफोर्स बना सकें और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में वर्क जो है वो गैप ब्रिज हो सके। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम क्या है? वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूथ को स्किल करने के लिए, और ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स, इन सबको ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है। 6 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिसेस को स्टाइपेंड अमाउंट भी पे किया जाता है जो 50% जो है वो रीइंबर्सेबल होता है एम्प्लॉयर को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखो कोई गारंटी नहीं होती कि इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी उसी कंपनी में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2-day नेशनल राइट शॉप ऑर्गेनाइज किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वर्जन 2.0 के लिए। तो ये एक मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स होता है जिसमें ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस देखी जाती है पंचायत की। तो इसमें असेस किया जाता है, मेजर किया जाता है प्रोग्रेस की, ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं लोकलाइज्ड SDGs को अचीव करने में। वन ऑफ द पर्पसेस जो हैं वो इस इंडेक्स के हैं कि डेवलपमेंट गैप्स देखे जाएं पंचायत के बीच में। तो 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स के बेस पर ये जो कंपाइल किया जाता है डेटा, जिसमें कि ये इंडिया के कमिटमेंट दिखा रहा है कि हम SDG 2030 एजेंडा अचीव करेंगे। तो इसमें अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर्स की कैटेगरी के बेसिस पर रैंक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं करणी माता टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने रिसेंटली करणी माता टेम्पल को देशनोक जो कि बीकानेर के पास है वहाँ पर विजिट किया है। तो हिंदू टेम्पल है, ये डेडिकेटेड है करणी माता को और 30 किलोमीटर दूर है बीकानेर से। करणी माता एक हिंदू वॉरियर सेज थी जो 14th सेंचुरी में थी, और करणी माता हाईली रिवर्ड हैं अमंग द लोकल्स, और इनको हम इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा मानते हैं। टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहते हैं इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर लगभग 25,000 रैट्स जो है वो रहते हैं, और इनको रैट्स को काबाज कहते हैं। वाइट रैट्स को काफ़ी सेक्रेड माना जाता है यहाँ पर। और इस टेम्पल को महाराजा गंगा सिंह ने 20th सेंचुरी में बनाया था, और ये टिपिकल राजपूताना स्टाइल में ये टेम्पल बनाया गया है। ओके,
So now let us see all these topics in English. So the first topic is base editing therapy. This topic is important for your science and tech section. So a 9-month-old boy became the first known human to be successfully treated using custom base uh, editing therapy, a precise form of gene editing. So this boy was suffering from CPS1 deficiency, which is a rare genetic disorder causing toxic ammonia buildup in blood. So what is CPS1 deficiency? It prevents the breakdown of nitrogen in the body, which leads to hyperammonia, which can be a fatal condition. What is CRISPR then? CRISPR is basically an immune system which is found in microbes like bacteria, and it helps in fighting the invading viruses. When a virus infects a bacterial cell, CRISPR helps to establish a memory, and then this bacterium takes a piece of the virus genome and inserts the DNA into its own genome. Then CRISPR starts producing a new guide RNA which directs an enzyme like a protein called CS9 to act like molecular scissors and cut that virus DNA. Okay, so this technology was pioneered in 2012. Okay, so how does this work? This gene editing, CRISPR CS9 based gene editing, how does it work? First task of the gene editing tool is to identify the abnormal DNA sequence behind a patient's ailment. Once the bad DNA is located, the scientists create a guide RNA attached to a CS9 enzyme, which is then introduced to the target cells of the patient. The guide RNA recognizes the bad DNA sequence, then the CS9 enzyme cuts the DNA at specified location, which is a process called double strand break. To prevent the regrowth of bad sequence, scientists also supply the correct DNA sequence after the cutting process. Okay, so how is it different from base editing? Base editing and CRISPR CS9 technology both are significantly different. In base editing, it does not make a double strand break. Rather, it enables targeted single base conversions with the help of CS9 enzyme, which allows scientists to fix mispairing of the bases. Base editing system works like a pencil and eraser, and the CRISPR system works like scissors and glue. And base editing does not even require any foreign DNA insertions. But of course, the cost is very expensive. Treatment is very personalized, so it cannot be applicable to other patients. And there are also complex approval mechanisms in countries like India. So the next topic is credit support for medium enterprises. This topic is important for economy section. So Niti Aayog has recommended the introduction of a dedicated financing scheme to allow medium enterprises to avail loans at concessional rates. Medium enterprises represent a crucial but often overlooked segment of India's economic fabric. Despite contributing significantly to exports and employment, they face persistent challenges in accessing affordable credit. In response, Niti Aayog has released a comprehensive report recommending policy interventions. So India's MSME sector, which comprises of MSME, contribute about 29% of the country's GDP and employs over 60% of its workforce. While micro enterprises make up 97% and small enterprises 2.7%, medium enterprises form only 0.3%. Yet they contribute 40% of the MSME exports. So that's why Niti Aayog is saying that they face a credit gap of almost $10 billion. And medium enterprises typically receive fewer priority sector loans than micro units, and they face borrowing costs which are approximately 4% higher than large corporations. Moreover, only 8 of the 18 MSME government schemes cater to the medium enterprises, and just 17.81% of the total funds are allocated to them. So Niti Aayog has suggested a sector-wise financing scheme based on enterprises turnover, with loans capped at 25 crore and maximum of 5 crore per individual request. Scheme would be managed by Ministry of MSME. So a medium enterprise credit card facility with a 5 crore limit has also been proposed. So the report is also advocating the involvement of retail banks for quicker fund distribution, so as to cut the bureaucratic delays as well. Apart from financial constraints, medium enterprises also struggle with several non-financial challenges like low adoption of advanced technologies, inadequate R&D support, lack of sector-specific testing infrastructure, mismatch between training programs and actual enterprise needs. Okay, so these factors hinder scalability and innovation potential within the segment. So to improve the access to government resources, Niti Aayog is also recommending a dedicated sub-portal under the existing Udyam portal. And it also calls for integration of medium enterprises specific modules into skilling and entrepreneurship training. So therefore, this report is underscoring the need for unlocking the potential of medium enterprises through inclusive and coordinated policy framework.
So the next topic is East China Sea. This topic is important for your international relations. So China's Liaoning aircraft carrier recently entered the East China Sea near Japan's Senkaku Islands for the first time, conducting aggressive military drills close to Japanese territory. What is East China Sea? It is an arm of the Western Pacific Ocean located in East Asia. It is a semi-closed sea bordered by the Yellow Sea to the north, South China Sea and Taiwan to the south, Japan's Ryukyu and Kyushu Islands to the east, and the Chinese mainland to the west. It connects with the Japan Sea via the Tsushima Strait and South China Sea via the Taiwan Strait. East China Sea and South China Sea together form the China Sea. Countries which border the sea include South Korea, Japan, Republic of China, and People's Republic of China. Rialo River and Yangtze River both drain into this sea. Weather in the East China Sea region is dominated by the monsoon winds, and about 35% of the global petroleum and petroleum product shipments travel through the East China Sea in 2023. So the next topic is INS Brahmaputra. This topic is important for your security section. So Indian Navy's guided missile frigate INS Brahmaputra, which suffered extensive damage in a dockyard accident last year, is likely to regain seaworthiness by the end of 2025 and be fully combat ready by mid 2026. It is the first indigenously built Brahmaputra class guided missile frigate built by GRSC. It was commissioned into the Indian Navy in 2000, and it takes on various roles like coastal and offshore patrolling. It also carries out counter-terrorism and anti-piracy missions. It can operate Sea King and Chetak helicopters as well. So the next topic is National Apprenticeship Promotion Scheme. This topic is important for your governance section. So recently at the 38th meeting of Central Apprenticeship Council, the MSDE has recommended a 36% increase in stipend. What is National Apprenticeship Promotion Scheme? It was launched in 2016 to give financial support to establishments who undertake apprenticeship programs. It is an initiative by the Ministry of Skill Development to develop skilled manpower, encourage establishments to enroll enterprises or apprentices. It also provides upskilling opportunities for candidates who have undergone short-term skill training. So the aim is to train a skilled workforce and bridge the gap between education and employment. So what is the National Apprenticeship Training Scheme? It is one of the flagship programs of Government of India for skilling Indian youth, and it offers graduate, diploma students, vocational certificate holders a practical hands-on on-the-job training, which ranges from 6 months to 1 year. Apprentices are paid a stipend amount of which 50% is reimbursable to the employer. Of course, there is no guarantee of employment after completion of training. So the next topic is Panchayat Advancement Index. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Panchayati Raj has organized a 2-day national write shop on rolling out Panchayat Advancement Index, which is a multi-domain and multi-sectoral index intended to be used to assess the overall holistic development and performance and progress of panchayats. It is aimed to assess and measure the progress made by grassroots levels institutions to achieve localized SDGs. One of the purpose of the Panchayat Advancement Index is to identify the development gaps of the panchayats. It has been compiled based on 435 unique local indicators and 9 themes of localization of SDGs. It reflects India's commitment to achieving the SDG agenda. So the panchayats are categorized into achiever, frontrunner, performer, aspirant, and beginners category. So the next topic is Karni Mata Temple. This topic is important for your art and culture section. So Prime Minister has recently visited the Karni Mata Temple in Dashnok in Bikaner, Rajasthan. So this is a Hindu temple dedicated to Karni Mata. It is 30 kilometers away from Bikaner. Karni Mata was a Hindu warrior sage who lived in the 14th century. She was highly revered by the locals and earned many followers too. She is believed to be an incarnation of goddess Durga. So this temple is known as the Temple of Rats. It is famous for the approximately 25,000 rats which live and are revered here in the temple. These holy rats are called Kabas. Out of all the rats, white rats are held specifically sacred. And this temple was built by Maharaja Ganga Singh in early 20th century. It has been built in a typical Rajputana style, okay, which has few shades of Mughal architecture also. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.